task is a typical vision development kind of a thing. So रोटी कपड़ा और मकान में से मकान कैसे सबको मिले, that is a task. We're about to take a tour of the Hiranandani complex. Meanwhile, finishing up our presentations and structuring our thoughts on the research. The field trip was quite interesting today. We started with a high-end building called Torino. It's even better than I think I expected. I would love to live here myself. We met a few people on the streets. थोड़े लोग थे जो वहाँ पे local stores पे काम कर रहे थे. Hello uncle, can we take 5 minutes? आप रहते यहीं पे? हिरानंदानी में ही रहते? नहीं मैं तो रहता कल्याण में। कल्याण में? जी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, आपके और आपके फैमिली के लिए एक घर मिलता, तो आप पहले तो आप लेते कि नहीं? श्योर, क्यों नहीं रहते? श्योर ले लेते? Strategy is to eventually provide affordable, large-scale mass housing to everybody. मैं अगर एक ऐसा टाउनशिप बनाता हूँ जहाँ पे मैं सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जमा करता हूँ, यू कैन वॉक टू वर्क, आगे दुकान पीछे मकान, आप ऐसी जगह पे जाओगे? मैं आपको सब दूंगा, स्कूल दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, रोड दूंगा, बिल्डिंग दूंगा. We've already started field research in a way, grabbing every possible person we can in the canteen and security guards, whoever, and just asking them, what do you look for in housing? You know, how long has the salon been here? It's been a year now in this place. आप कहाँ से? बॉम्बे से ही हैं? नहीं यूपी से. यूपी से हैं? अगर आपको अपना घर बनाना होता, अपना परमानेंट घर जहाँ पर आप आपके फैमिली बच्चे रहें, तो आप कहाँ चुनते हैं, यहाँ मुंबई या गांव में? हम लोग तो गाँव में रहते हैं, तो गाँव में वहाँ रहना पसंद करते हैं आप? Any reason why you chose Powai? It's a good community, you know. Nice structure, nice building, nice architecture. Is this place affordable for a common person, or you don't think so? Or even for you, for that matter? Definitely. Now even I can think so, okay, buying it again to this kind of place, it's not possible. आपको सोचा कि चलो आपको बड़ा घर चाहिए, लेकिन आपको वापस जाना पड़ेगा, तो आप जाओगे? जरूर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस? आज आपको मेरे को सस्ता घर दिलाना पड़ेगा, बस पहले दिलाओगे? सस्ता घर दिला दूंगा, ठीक है, दलाली डबल लूंगा. दलाली डबल लूंगा मैं. How do you think is the pricing of Hiranandani? Is it like It's somewhat towards the higher side. towards the high side? Oh, just try? Just smell. The shop did my best to, converse in Gujarati, which failed. Suppose we are to provide housing to lower income middle class people in India. गवर्नमेंट का है ना, महाड़ा है, सिडको है, दे हैव टू अप्रोच देयर. If you know the lottery systems are there nowadays. जिस तरह यहाँ पर हिरानंदानी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट है, अगर लखनऊ में जाकर के हिरानंदानी ग्रुप ऐसा ही करे, क्या लगता है चलेगा? ठीक है, धन्यवाद. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, thank you. सुबह जो हमारा फील्ड ट्रिप रहा वो बहुत ही एक्सीलेंट रहा. कुछ बहुत आई ओपनिंग शॉट्स मिले, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो रियल में समझ में आई. अभी अगर आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे टीम मेंबर्स लेक के उस पार वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हम लोग काम करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और कैसे मिस्टर निरंजन हिरानंदानी की जो उनका विजन है कि आगे दुकान और पीछे मकान, उसको कैसे आगे अगले 25 साल में फेस चेंज करें और हर आदमी तक के हिरानंदानी वे ऑफ लाइफ को पहुँचा सकें. This is part A, this is part B, this is part C. पार्ट ए प्लस बी प्लस सी इस पूरी कहानी में आनी चाहिए. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ. ए प्लस बी प्लस सी उसका एक फाइनल इज इक्वल टू समथिंग, एक आंसर आना चाहिए. तो मैं वही बोल रहा हूँ. वो आंसर हमको उनको तो बताओ. मैं ए सेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, करो. बी सेक्शन आप करो, ठीक है. सी सेक्शन ये करेंगे. हम लोगों को नहीं पता है कि हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो क्या बना रहे हैं. वी डोंट नो दैट. लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोगों को लगता है कि बॉस अगर जीतना है तो हम ही लोगों ने जीतना. We will plan the township in 3 concentric circles. Yeah. With the inner circle being
premium, Yeah. outer circle being economy or budget, Budget and and low the outer low circle cost being housing. low cost. We are now focusing on a presentation. So we want to ensure that the 10 minutes that we get in the presentation, we make it as interesting as possible. We are also keeping in mind the fact that we are talking to Mr. Niranjan Hiranandani, who's probably seen it all, done it all. So we do not want to come across as too condescending or in a consultancy role. The idea of India is one land embracing many. In the future, sustainable and coexisting communities is not an option, it's a necessity. Gentlemen, presenting our concept of symbiotic living and sustainable communities. We call it reciprocity. I sincerely believe, I think amongst all the three teams, we do stand a fairly good chance. We gelled well, we worked well, and I think I'll be quite surprised if we don't make it today. Let's give some specific points on examples of this is one tier 3 location, low resource area next to a high resource area. So we'll put an example and then we'll move to the next point, right? We have a strategy that really focuses on all India. As the task was set for all India, we have done that, especially focusing outside of the metros on the tier 3 and 4 and even village scenarios. The moment you go into a tier 3 kind of a location, which is more like a village, people there are very affluent. So it's actually a village, but you will see Mercs and Audi Q7 parked in a village. What is the elasticity between the willingness to pay and the cost of labor, of material? And can you actually create all of this in a sustainable way with a low cost? I think I am the strongest contestant in the team, to be quite frank. I think Kunal is also very, very strong. Akshay has contributed less than I'd hoped this time around. I'm sure we'll all succeed together. That's our strategy. That's the strategy. Focusing on the semi-remote and extreme remote areas to relieve the pressure on the Tier 1, high, top dense 1. population metros. Doing good. Good team. This should take 10 seconds and move on. Okay, straight off the bat, I'll tell you, I'll have 10 minutes. Good luck. Identifying the low connectivity areas, using the public-private partnerships. Don't actually buy up a piece of land. Lease it from the government. One of the things which has not come out strongly enough, do you have any thoughts on the affordability issue?